Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, thank you very much for joining me today's session. My name is Hameed sir, and on behalf of Institute of Freelancing and Peer Finishing School, I welcome you all. Today is the second class of our fashion and interior design section, and today we are going to discuss a very important thing, and that is the fashion designers from around the world. Yesterday we discussed the fashion designers from Pakistan, and today the second and the most important thing is being a fashion designer, being into this industry, you must have to know all those who are from the international market. So is there anyone who can guide me what exactly would be the explanation or what exactly would be the definition of fashion designers? Is there anyone who can just join me instantly in the session, or did you have no idea at all about this, that who exactly is the fashion designers? Just raise your hand so that कि मुझे ये at least idea हो जाए कि there is someone who knows exactly what is the meaning of fashion designer and what exactly is the fashion designer's responsibility. All right, so that means we can continue. There's no response from the students, so that means you have no idea about this all. Okay, let me get started with from this one. Dear students, fashion designers are the people who not only design clothes but also design dreams. The list of the fashion designers is created based on the success and fame earned by the designers itself. So, you being the fashion designer, you must have to go with your dreams first. It is no compulsion from anyone that you have joined this field, or is there any there's no as such specific qualification for this. If you have inside the fashion designer, that is the one who will actually brings you out and who will get you out of yourself, and that's how you can become a fashion designer or the interior designer. So it is all about the wear ups that yesterday we discussed a little bit about the history, and in which I told you that it has been started just a human being that has been there. So let's start from the first one. Who exactly is the fashion designer from the international world? Is there anyone who can just tell me कोई international brand मुझे कोई बंदा बता सकता है? Anyone from this class in the chat box, just give me any good name that's the international brand. Either in the chat or you can unmute yourself. Okay, Gucci. Yes, very well done, Asfan. I was expecting your first response. All right, go ahead. Levi's, Hugo Boss. Very well. Excellent. So that means you have a very good idea about all this. हो Absolutely. गया. Yeah, perfect. Adidas. Yes, Zan. Absolutely nailed down. But you have still missed one of the largest, which is actually in the sports industry, and that is Nike also. And there are plenty of others, by the way. And based on the fame, based on the earnings, there is a long list which has been available today, and I will be discussing. Yes, absolutely. CK is number one, by the way. Rubab, I'm starting with you first. Is there anyone who knows this personality? He is the owner of CK. The short version of Calvin Klein is CK, and is famous, popular almost all over the brands by by everyone. In 1968, this brand was founded by CK, a famous American fashion designer. He initiated his career by opening a store of men and women coat in New York City. Since then, he has not looked behind and has expanded his business with an incredible pace and has been ruling the fashion industry very strongly. He is truly deserved the number one fashion designer in the world. And my dear student, we have to learn from all these personalities, that how they have started, how they have involved themselves, and how they can reach, how they reach to this stage, so that after going through their stories, we could follow them and we could reach to that stage also. Zan, you wanted to say something. Is it something that you have unmuted yourself, or it is it is nothing? Okay, thank you. Okay, that's number one as the CK, and Rubab has actually the one, she is actually mentioned this, and there are some others also. So who is this Versace? He is actually the vice president and the chief designer of Versace Group. And by the way, she is again इनमें से जितनी personalities हैं, by qualification, by education, there is no one who is a fashion designer, who has never gone through any university or things like this. And but the fashion designer, or
the clothing designer that was actually inside themselves. And as I told you the story yesterday about the Pakistani fashion designers, and one of them was HSY. HSY, by qualification, he is not a fashion designer, but that was something his aim, and he followed his aim, and that's how become the number one fashion designer in the world. And this story actually is goes with all of those who are actually in this list. And there are some who are actually कुछ ना कुछ उन्होंने क्वालिफिकेशन ज़रूर ली, लेकिन दे ऑल आर बेसिकली फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, लेकिन इनसाइड दिस, इनसाइड देमसेल्फ, आइदर ही और शी, उनके अंदर ही फैशन डिज़ाइनर का ये सारा कुछ था, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड अप देयर कैरियर. Acha, she is the first fashion designer for using an A-list celebrities to promote her designs on the catwalks. As you all know, that is something usually a bigger brands all over the world, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे South America, चाहे Asia हो, the bigger brands came up with that kind of things, catwalks, जहाँ पे वो अपने fashion designs, अपने designs को लाकर promote करते हैं. That's how the media and all those huge personalities, like जिस तरह इन्होंने brand introduce किए when promoting her brand in Hollywood. She chose Madonna, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Demi Moore, and others to serve the purpose of promoting her brand. So the idea is this: okay, once you become a fashion designer, that is the basic things when you reach from national or the local level to the national and the international level. जिस जिस तरीके से आप ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, you must have to follow these world known figure personalities and the figures जिन्होंने ये काम किया, and they have successfully reached to this stage. The third one in this uh, is there anyone who knows ये brand Valentino किस में deal करता है? So by the way, he is an Italian designer, incredible living legend without a doubt. He is best known for designing clothes for famous celebrities around the globe. No idea? Okay. I just want Mamoona Nawal, please, you need to mute yourself because आपकी वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है. ओके जी, सो लेट्स मूव टू दैट. अगर आपको नहीं आइडिया तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज मैं इनको बहुत ज़्यादा रेफर करता रहूँगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इन पैरेलल टू हिज पर्सनैलिटीज़, इन पैरेलल टू देयर प्रोफाइल जो कि हम गो थ्रू करेंगे, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू note it down that what exactly is their brand and what exactly is their logo, and that is known in the world as V. V stands for victory. V stands for Valentino. And by the way, this is the most expensive brand in the European as well as in the North American region, South American, North American region, and that okay, no problem. That is something जिसकी वजह से he is known in the world as only in the elite class fashion designers. इनकी usual clothing और इस तरह की चीज़ें ये they do not actually offers in the Asian Pacific market. लेकिन अगर आप में से कोई मिडल ईस्ट या दुबई या अबू धाबी या इस तरह की किसी स्टेशन पे गया हुआ है, आई हैव सीन दिस ब्रांड. बहुत ज़्यादा आउटलेट्स हैं into UAE where you can get their brands and things like this. But anyway, the third is the Giorgio Armani, as some of the students were mentioning this also. GA stands for Giorgio Armani. या different brands से ये पाकिस्तान में भी print होता है, and there are so many industries in Pakistan जो कि आने वाले सेशंस में मैं आपको बताता रहूँगा कि if you go to the फैसलाबाद and सियालकोट, वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस ब्रांड के लिए काम करती हैं as this brand, and all around the world this works, right? This is the brand which is known by the only designers who changed the trend of fashion industry after creating brand Armani back in 1975. Armani is also the first ever designer to ban models who has been body mass index under 18. He is truly a living legend and a great fashion designer, and you just need to know his name, and that's what his brand is. And have a look at his logo. That is very important, that he used the falcon in GA, correct? So that is something. Falcon is usually the national क्या उसे कहते हैं national क्या है ये परिंदा, national bird of America. जिस तरह पाकिस्तान में falcon is known as the air force, इसी तरह अमेरिका में this is also their brand.
Okay, Ji. This is Coco Chanel she's a very young lady, but a leading figure in the fashion industry. She was a French designer and is famous for her brand channels. Up till now, she is the only single fashion designer to be named on the most important people of the century by Time magazine. Time magazine is the one जो कि इस तरह के renowned brand को लेके आता है, and मैं इंशाल्लाह कुछ lectures आपके साथ share करूंगा that you need to follow those international magazines, and most probably after this or at this weekend I'll be sharing you the complete lecture which is from one of the previous class. वो आपसे share करूंगा so that you can get the maximum benefit out of it. And being fashion designer, you must have to follow these international personalities and their brands through these magazines जो कि regular basis के ऊपर available होते हैं. There are two ways you can get those magazines. One is the online, the second is the offline. Offline means you have to pay the postal prices and the subscription prices, whereas online पे जाके you can even get that in free also. Free आपके email address के ऊपर in the PDF format में आ जाएगा, and you can get the basic designs and the basic ideas from there also. अच्छा जी, Polo is another very renowned name. Ralph Lauren is an incredible designer world has ever seen. He is widely known of his excellent designing of the brand. He introduced Polo in 1972. He earned his fame when he introduced a notable short sleeve shirts with the Polo logo on it. And if you remember, this is the Polo logo, which is actually आप बहुत ज़्यादा देखेंगे ऑन टू दी मेंस टी शर्ट्स और शर्ट्स के ऊपर. एंड बाय द वे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑफ पोलो या इस तरह की शर्ट्स एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, एंड ऑल दोज आर एक्चुअली एक्सपोर्टेड टू थ्रू आउट द वर्ल्ड. एंड उनमें से एंड उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अगेन that has been developed in Sialkot as well as in the Faisalabad, and there's a plenty of huge setups in Karachi also. Factories हैं जो कि export के orders लेती हैं और सिर्फ पूरा साल वो पोलो की लाइन, पोलो की जो product line है उसके लिए they are actually reserved for them. So the idea behind all this story is कि अगर आप अपने ब्रांड को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवा लें तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 or 3 फैक्ट्रीज इन एवरी रीजन. कीप इन माइंड कि ये जो पाकिस्तान से ये सारे के सारे ब्रांड प्रोड्यूस होते हैं, दे आर नॉट द ओनली वन जो कि पाकिस्तान में ही से ही प्रोड्यूस होके जाते हैं. दे हैव देयर ओन सेटअप्स इन बांग्लादेश आल्सो. They have their Bangladesh, India, Pakistan, and Indonesia, and यूरोप में भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस करती हैं, एंड ह्यूज फैक्ट्रीज इन अमेरिका. एंड मैं कुछ वीडियोस उसकी भी शेयर करूँगा सो दैट यू शुड हैव एन आइडिया कि अमेरिका में जो सेटअप्स प्रिंटिंग के या इस तरह की शर्ट्स के जो बेसिक बनते हैं वो कितने ह्यूज लेवल पे होते हैं. एंड बाय द वे, लेट मी होल्ड ऑन अ सेकंड हियर एंड लेट मी गिव यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. rather I want कोई ना कोई मेरे साथ इसमें ज्वाइन करे. Is there anyone who knows कि ये प्रोसेस कैसे चलता है, लाइक ये कहाँ से एक्चुअली प्रिंट होती हैं और किस शेप में प्रिंट होती हैं, and when they exported? Aswant, can you unmute yourself? जी सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डू यू हैव एनी आइडिया कि जो जो अच्छे ब्रांड्स, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पोलो या इस तरह की जो शर्ट्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू आर फ्रॉम द पिंडी इस्लामाबाद रीजन से हैं आप लोग. यहाँ पे भी बहुत बड़ी यस सर. मार्केट है इन प्रोडक्ट्स की. सो व्हाट डू यू थिंक, जब ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं, लाइक यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद व्हाट एग्जैक्टली इज द बेसिक फॉर्मेट जो कि इसका निकलता है और वो जाता कहाँ पे है? एनी आइडिया? सर ये बेसिकली यहाँ पे हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज यहाँ से तो ये प्रोड्यूस होती हैं बल्क क्वांटिटी में. ये शर्ट्स वगैरह फिर ये फिर बाहर अपने फिर ये जहाँ से जैसे अब हमने एक्सपोर्ट करना है ये यूएसए में जाके इनके लोगोज लगते हैं, फिर ये वहाँ पे आगे अपने आउटलेट्स पे पहुँच जाते हैं. 100% राइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने, मैं जस्ट पॉइंट पे आना चाह रहा था, आपने एब्सोल्युटली उसको एड्रेस किया है. जब ये पाकिस्तान से प्रोड्यूस होती हैं इनके ऊपर पोलो का नेम नहीं लगता. लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. ये जाती हैं यहाँ से, जो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस, जो कंपनीज इन्हें ऑर्डर करती हैं, ये वहाँ पे जाती हैं. ये पोलो के टैग्स सारे के सारे वहाँ फिट इन होते हैं इनके ऊपर. एंड
उसकी there's multiple reasons by the way, taxes भी हैं उसमें, there are multiple reasons and further ये कि not necessarily कि ये सिर्फ पोलो के लिए प्रोड्यूस होती हों, ये उसके अलावा बहुत सारे अदर ब्रांड्स के लिए भी प्रोड्यूस होती हैं। another very important question, do you have any idea कि ये किस कलर में प्रिंट होती हैं? Sir, no idea on this. Okay, the usually ये होता है कि normally डिफ़ॉल्ट कलर दैट इज़ वाइट कलर में ये सब की सब प्रिंट होती हैं। आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं इंशाल्लाह इसका पूरा प्रोसेसिंग आपको बताऊंगा। वेरी वेल डन नादिया, निदा निदा उमर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सब की सब वाइट बेसिकली होती हैं बिकॉज एज यू नो मोस्ट प्रोबेबली मंडे से आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको पूरा जब प्रोसेस बताऊंगा कि सीड्स से जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और करते करते जब ये फैक्ट्रीज तक पहुंचता है, द प्योर कॉटन इज इन व्हाट कलर? That is quite obvious. White. That is in white color. White color say they produce this basic into the white shape outfits. ठीक है ना? वहां से ये प्रोसेसिंग की there are factories जिनको हम लोग प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज कहते हैं फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में। प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज इनको मल्टी कलर्स देती हैं, ठीक है। स्टिल उस टाइम तक दे आर ऑलवेज इनटू द फ्लैट कलर्स, लाइक फॉर एग्जांपल वाइट कलर से दे बिकम इनटू द ग्रेश कलर, जिस तरह रॉल्फ लॉरेन ने ये जो एक कलर पहना हुआ है, ठीक है ना। ये यूजुअली ये होता है, नॉट इन 100% केसेस, लेकिन यूजुअली ये होता है कि ये वाइट प्रिंट्स होती हैं। वाइट प्रिंट होने के बाद दे गोज अगेन इनटू दिस डिफरेंट फैक्ट्रीज जहाँ पे जाके ये मल्टीपल कलर्स में दोबारा से फिनिशिंग होती है। देन वहाँ से इसको फैशन डिज़ाइनर्स उठाते हैं और फैशन डिज़ाइनर्स इसको अपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से, ग्रेज फैब्रिक उसे हम लोग कहते हैं कि जो बेसिक बिल्कुल शेप की शर्ट्स होती हैं उनको लेके जाते हैं, उसके ऊपर बेसिक डिज़ाइनिंग करते हैं, correct? So that is in between the time before it landed to the end user, उससे पहले फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करके आप तक पहुंचाती हैं। असफंद ए के ब्रांड इज एक्चुअली द वन जो जिसने ये ऑर्डर प्लेस किया टू द फैक्ट्रीज। दे गेव दिस इनटू द वाइट शेप स्टैंडर्ड बल्क में इन मिलियंस की क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होती हैं, और मिलियंस की क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने के बाद when they landed to you as a fabric designer or the fashion designer, so Aswan, that would be your responsibility now that you come up with your AK-47 brand, correct? Yes, sir. Now that would be your Yes, sir. responsibility कि अपने ब्रांड को अब आप चमकाने के लिए, उसको मार्केट में पॉपुलर करने के लिए, you as fashion designer, you came up with your choice, you came up with your color schemes, you came up with multiple things, multicolors, white, different designs, different aspects, and inshallah जो हमारा सेशन नेक्स्ट वीक से फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर में शुरू होंगे, उसमें हम बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें जो फैशन डिज़ाइनर्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ समथिंग विच वी ऑल विल बी डूइंग, एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट कि आप ये सारे के सारे लोगोज, थैंक यू असवन, that is something which I intend and I want कि आप लोग सारे के सारे in the idea is not this कि मैं पोलो को आपके सामने पॉपुलर कर रहा हूँ, या idea is this कि मैं in other words they are paying me to give them words, no, not at all like this. The idea is just this कि आप इनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाएं, और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस चल रहा होता है उसमें से गो थ्रू करें, ताकि आपका सारा जो माइंड प्रोसेस है वो गो थ्रू हो सके, करेक्ट? So that is the sixth number. Let's get back to this the basic thing first. Gucci, who was telling me about this brand? And by the way, I was supposed to ask this, is there anyone who knows exactly the brands? तो आपको पता है, लेकिन who is the owner of this brand? No one actually knows them. That is why I want you to create your brands, because नो वन नोज मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँगा, ठीक है ना। लेकिन टॉम फोर्ड प्रॉबेबली गुची सारी दुनिया जानती है व्हाट दिस ब्रांड इज अ फैशन डिज़ाइन ब्रांड जो डील करता है डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स में, बट मोस्ट प्रॉबेबली उनमें से 90% लोगों को टॉम फोर्ड के मुतालिक नहीं पता, एंड दैट्स हाउ दिस होल एक्चुअली ब्रांड इंडस्ट्री फ्लरिश। और इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने ब्रांड्स के साथ इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। Okay, G. Tom is widely famous for overhauling Gucci in its bad days. Tom Ford is founding father of the brand.
Tom Ford initially, which actually came to this stage, which totally dominates the accessories and the menswear market. Menswear market में it's इनका एक बिल्कुल standard अपना एक नाम है, and there is no one actually who is actually matching them. And by the way, there are plenty of other इनके brands में, as you know, there's other than the menwear shirts, so there are so many things. As is there anyone who knows Kate Spade या Kate Spade New York या NY और something like this? कोई ऐसा brand किसी के ज़हन में? अच्छा, एनीवे, बाय द वे, मैं जिस तरह मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इन सारे के सारे ब्रांड्स या जो इनके ओनर्स हैं, उनमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जिनका कोई भी ताल्लुक नहीं है आपके किसी आपकी फैशन डिज़ाइन की क्वालिफिकेशन के साथ. एंड बाय द वे, Kate Spade, she is a co-founder of Kate Spade New York. She holds a graduate degree in journalism from Arizona University, and she is widely known as the designer's handbags and is co-considered one of the best bags around. So that is very important for you to understand कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था. Absolutely correct, 100%. Handbags में this is a huge brand into the international world. यूजली पाकिस्तान में आप लोग बहुत कम इनको देखेंगे. बैट्सी जॉनसन इज़ बाय द वे यूएस ब्रांड है, लेकिन ये भी फैशन इंडस्ट्री, एज यू कैन सी हर पिक्चर ऑल्सो, शी इज़ लाइक अ फैशन डिज़ाइनर, और बिल्कुल ही एक्सट्रीम किस्म के फैशन डिज़ाइंस पे ये जाती हैं. एज यू कैन सी हर लोगो, दैट्स वाई आई वॉन्ट कि अगर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा तो यू कैन इवन टैग योर नेम एज योर ब्रांड, like Betsey Johnson. Have a look at this. It's a handwritten Betsey Johnson, और उन्होंने इसके बाद कभी भी इसको चेंज नहीं किया. And by the way, this brand is Europe and America only, mainly into the high fashion और उस तरह की फील्ड्स में जाता है. और ये लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा accessories में हैंड बैग्स, scarves, accessories, hats into the and they are into specialization, and they goes into this kind of brands. Then is the मार्क जैकोब्स. पाकिस्तान में कंपैरेटिवली आपको किसी न किसी जगह मार्क जैकोब्स की या लुइस की शर्ट्स मिल जाएंगी, एंड ये सारे के सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे. बाय द वे, these two are actually from College of Design. They have actually studies the design, and he sold out his first ever stack of knits sweaters, and within no time he became the first celebrity. And in 2010, he was also mentioned in the list of 100 most influential people in the world, the Time magazine. And look at this, मतलब again ये वो वाली एग्जाम्पल है कि अल्लाह ताला अगर किसी को नवाजना चाहे तो फिर इस तरीके से जानता है कि उन्होंने जस्ट एक छोटा सा ब्रांड बनाकर और उससे काम स्टार्ट किया, और करते 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 सारी दुनिया में छा गए. लुइस लुइस की शर्ट्स आपको बहुत एक्सपेंसिव शर्ट्स मैन वियर में मिल जाएंगी. दीज आर एक्चुअली ड्रेस शर्ट्स, एंड मार्क जैकब्स की भी ड्रेस शर्ट्स एंड ड्रेस सूट्स आपको इनके मिल जाते हैं अमूमन मार्केट में. ओके, सो हियर इट कम्स द लास्ट लिस्ट. हु इज द 11th वन? Is there anyone who can just tell me? I intentionally hide the name of all जो कि 11th नंबर पे आता है. So I just want कि आप में से कोई बंदा मुझे चैट बॉक्स में, या you can unmute yourself and you can put in your details here. Anyone? Any idea? Nike, yes, exactly, Nike. और इसके अलावा लीवाइस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. और बाय द वे, ये 11th का जो नंबर है ये इनमें से रेनाउंड ब्रांड्स नहीं है. लाइक आपने लीवाइस बहुत बड़ा ब्रांड, नाइकी बहुत बड़ा ब्रांड रख दिया. माय डियर स्टूडेंट, दिस प्लेस इज फॉर यू ऑल. करेक्ट? आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न. मैंने इतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाई, 10 दुनिया के टॉप फैशन डिजाइनर्स की स्टोरीज आपको सुनाई, एंड आई जस्ट थॉट कि नो, द 11th प्लेस इज योर्स. इट इज जस्ट द माइंडसेट. This place is your picture, this place is your brand, and this 11th number is your profile. I just want you to come up with your brands. Correct? So here onward, आज हमारा session again would leave to that stage,
जहाँ से हमने अपनी डिस्कशन का आगाज़ करना है। थैंक यू वेरी मच जैन, इट इज़ थैंक यू वेरी मच रुबाब, जज़ाकल्लाह, and that's what my aim is, to motivate you at that level. नाइकी, लीवॉइस, गुची, जो जो ब्रांड्स हैं भाई होंगे, अपने घर होंगे, अपनी जगह होंगे। आई एम कंसर्न्ड with my brand, and that is AK, correct? And that is, you have to come up with your things, and this place is vacant for my students, correct? So yes, absolutely, WZ dupatta, very well done. गुले यास, खूबसूरत नाम, इससे खूबसूरत नाम नहीं हो सकता जैन। Excellent. Now what you have to do is, the only two things which you have to do, अगर मैंने आपसे शेयर किया हाउ टू क्रिएट अ लोगो, वीडियो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ yesterday, is there anyone who go through that video? No, I think I have sent you a video. Okay, Aswan, if you have gone through that video, what was at the end of that list? What was the ending of that video? Any idea? That is why, my dear students, I am sharing you all these lectures and videos to all of you. मैंने उसमें कम से कम 20 to 25 की लिस्ट आपसे शेयर की हुई है। वो तमाम के तमाम फ्री वेबसाइट्स जहाँ से जाके आप अपना ब्रांड और अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू गिव देम योर ब्रांड नेम, गुले यास, यू हैव टू टाइप इन देयर, और वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस बना के दे देगा। भाई गुले यास कैन बी समथिंग लाइक दिस, कैन बी समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? दुपट्टा या WZ दुपट्टा या whatever, जो भी आपका नाम है, ओके? सो दैट इज व्हाई आई शेयर दैट वरीशा जिया दुपट्टा, करेक्ट? WZ, okay, perfect. So dears, that is why I will be sharing again those video to all of you, that is from my previous class, और ये वाला सेशन भी आपसे शेयर कर दूंगा, so that कि आप लोग इन वीडियोस को गो थ्रू करें, और गो थ्रू करने के बाद अगर आप खुद से बनाना चाहें तो मंडे से वी विल बी स्टार्टिंग दोज लेक्चर्स। लेकिन इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड फर्स्ट, देयर कुड बी 1000 आइडियाज़ जो कि आपके माइंड में आ सकते हैं। यू कैन गो थ्रू ऑल दोज वेबसाइट्स, और उन वेबसाइट्स के थ्रू जाके यू कैन make up your mind that I want my logo should be something like this, correct? So dear students, thank you very much. That was today's lecture, and I hope कि आज का ये lecture starting from the international fashion designer से करते 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 आज की क्लास के the world number one fashion designers are you all. So आप इन जो मैं आपको तरीके बताता जा रहा हूँ, आप प्लीज़ इनको फॉलो करते रहें, और बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह the success is guaranteed.